वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर एंड दिल्ली। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं मोस्टली जो इम्पोर्टर्स होते हैं उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो जो भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा ये एक चैलेंज होता है कि जब भी गुड्स यहाँ पर इंडिया के अंदर आती है, जब भी वो होम कंजम्पशन के लिए, क्लियरेंस के लिए जाते हैं, तो जो कस्टम ड्यूटी है उन्हें क्या है उसी टाइम एट दैट मोमेंट पे करनी होती है। जिस और कई बार क्या होता है कि कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करने में कई जो है इम्पोर्टर्स क्या है उस टाइम जो है उनके पास पेमेंट वर्किंग कैपिटल का इशू होता है, जिसकी वजह से पेमेंट वो नहीं कर पा रहे होते हैं। उससे उनका जो प्रोसेस है, जिस भी रॉ मटेरियल को उन्होंने मंगाया था किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, या कोई कैपिटल गुड्स मंगाया था, कोई मशीनरी मंगाई थी, तो उससे जो प्रोडक्शन है वो उस पर क्या है वो हैम्पर होता है। तो इसी चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट भी काफी जो है यहाँ पर सपोर्ट कर रही है और पॉलिसीज में यहाँ पर जो है मेजर चेंजेस भी किए हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस द सेक्शन 58 एंड 57 जो बात करता है पब्लिक वेयर हाउस की एंड प्राइवेट वेयर हाउस की। और इसके अलावा एक गवर्नमेंट की स्कीम है MOOWR, यानी जो मैन्युफैक्चरर है या और कोई भी है, अगर कोई वो रॉ मटेरियल मंगाता है या कोई कैपिटल गुड्स मंगाता है, तो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं जहां पर वो अपनी गुड्स को स्टोर कर सकता है जब तक कि उनका जो है अरेंजमेंट नहीं हो जाता टू make the payment of custom duty, right? So now in this the video we are going to discuss how to get the license for public bonded warehouse and as well as the private bonded warehouse, और किस तरीके से आप कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं टू डेफर द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो नाउ जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो वेयर हाउस होते हैं, वेयर हाउस आर द टू टाइप्स। फर्स्ट इज द पब्लिक वेयर हाउस एंड सेकंड इज द प्राइवेट वेयर हाउस। And the private warehouse is owned and managed by the suppliers and resellers to fulfill the distribution activities, right? And public warehouse is owned by the government and used by the private suppliers, right? And जो इसके अलावा कोऑपरेटिव वेयर हाउस भी होते हैं जो कि ओन किए जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड बिफोर अप्लाइंग द लाइसेंसेस, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइसेंस का अप्रूवल है, इट विल बी गिवन बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड कमिश्नर ऑफ कस्टम, and if custom officer is satisfied that all the conditions regarding the custom bonded warehouse has been complied, right? And thereafter, what are the benefits of a warehouse, right? First of all, you can manage your inventory in a better way, right? It will defer your custom duty payment by a 2 year 3 years, right? Right. And it will decrease the overhead cost, right? It will provide a central location, right? You can choose a central location for smooth supply of your product after manufacturing in custom bonded warehouse, right? Now we will discuss what are the eligibility criteria to obtain the warehouse licensing. First of all, the person who are applying the warehouse certificate, warehouse license, it must be a citizen of India, or the business is incorporated or registered under any law for the time being in force, right? Thereafter, the applicant will submit an application along with the terms and conditions as may be specified previously by commissioner, right? Thereafter, the applicant will submit a solvency certificate from the schedule bank for a sum specified in the custom regulations, right? And there are certain additional conditions is prescribed by the Custom Act 1962 before applying the public bonded warehouse, right? The applicant must not be declared insolvent and bankrupt by the court or tribunal, right? It not been penalized under any offense under the Warehousing Management and Regulatory Act
and Central Excise Act, and not convicted any offence for the time being in force, and it has not been declared by unsound mind by the competent court, right? These are the additional requirement which is prescribed under the Custom Act 1962 and rules and regulation made thereafter. After that, what are the जो प्रिंसिपल कमिश्नर है या कमिश्नर ऑफ कस्टम है, व्हाट आर द प्री चेक्स? जब वो कोई भी लाइसेंस ग्रांट करेगा तो सर्टेन प्री चेक्स जो है वो करते हैं। सबसे पहला जो साइट और बिल्डिंग है जो जिसके लिए आपने प्रपोजल दिया है, राइट, अगर वो सूटेबल प्लेस पे नहीं है, स्टोर गुड्स को स्टोर करने के लिए नहीं, ड्यूटेबल गुड्स को, तो वो लाइसेंस आपको नहीं मिल पाएगा। सेकेंड इज द साइट और बिल्डिंग ऑफ द प्रपोज्ड वेयर हाउस इज नॉट सूटेबल। अगर जनरल कस्टम ऑफिसर के लिए अगर वो बिल्डिंग या जो भी जगह है या वेयर हाउस है वो सूटेबल नहीं है फॉर जनरल सुपरविजन, राइट, एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, राइट, एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, तो इस केस में भी जो वेयर हाउसिंग लाइसेंस है इट विल नॉट बी ग्रांटेड, राइट। देयर आर मोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्पेशल वेयर हाउस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever you are filing the application for the public warehouse, the name of the warehouse will be mentioned, mobile number, email address of warehouseman, and scanned copy of warehouseman PAN card, photograph of warehouseman, Aadhaar card, scanned copy of ownership details, in case of rent, lease or partnership, scanned copy of deed, warehouse office complete address with PIN code, right? These are the information which are required to be given at the time of filing the application, right? And thereafter, what are the documentation is required at the time of application, right? An individual category of license, type of warehouse selected, total land area जिसके अंदर जो है वेयर हाउस बना हुआ है, नियरेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, स्टेट हाईवे कौन सा है, रेलवे स्टेशन कौन सा है, इसके अलावा एप्लीकेंट फॉर लाइसेंस इन एप्रोप्रिएट फॉर्म्स, साइट प्लान, NOC from owner, right, bank solvency certificate, undertakings, list of director, board resolution, appointment letter of warehouse keeper. So all of these information is required to be mentioned at the time of filing the application, right? तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ये काफी ज्यादा है वास्ट होता है, और जो इनके अंदर इंफॉर्मेशन जो अटैच होती है वो भी काफी ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या है सबमिट होती है, along with the list of document which have been I already discussed, right? Thereafter, now we will discuss the what is the process for applying the warehouse license, right? So first of all documents जो है required to be filed along with the application, right? It must be proper and completely legible, right? And thereafter application form along with the submitted documents are examined by the commissionerate, right? जो आपने application submit की है it will be examined by the custom officer and the inspector of the customs, right? Thereafter जो custom officer है has to be examine the application form, and if the application is okay in all respect, documentation are complete, information given in the application form are completely in all respect, right, and the custom officer is satisfied that there is no pendency in the application, the custom officer will grant the license, right? Thereafter bond officer examines the application and in it also the premises, जो bond officer है वो जो है आपकी एप्लीकेशन को क्या है एग्जामिन करेगा, then the officer will visit your premises. After conducting a proper examination of the application and premises, the license will be granted, and जो bond officer है वो it will submit our report to the principal commissioner or the commissioner within 15 days of receipt of application, right? The principal commissioner or commissioner licensing authority has discretion to approve or reject the application after receiving the report within the next. जो प्रिंसिपल कमिश्नर है और ये कमिश्नर है जो बॉन्ड ऑफिसर की रिपोर्ट उसको रिसीव होती है तो उसके पास राइट है कि वो 15 डेज के अंदर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, राइट? आफ्टर कंफर्मिंग टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन, जब भी कंफर्मेशन आएगा
either it's a acceptance, either it's a rejection of the application, right? It must be intimated to the applicant a decision of the authority, right? Whether the license is granted or not. After the intimation of rejection with reasons, the applicant further relates to the necessary papers to the licensing authority, right? So this is the complete process, right? Complete workflow, how the license will be allotted to the applicant, right? This is a very technical work. It will take a time and it involves a lot of cost, right? So this is the very technical matter for getting the license of warehouse, whether it's a private bonded warehouse, whether it's a public bonded warehouse. Lot of requires the time, cost, and sufficient knowledge before applying, right? This license, now we will discuss what is the validity of the license. The validity of the license is until the when the license is not cancelled by the custom officer, right? This is the validity of license. So thank you guys for watching this video. If you have any query related to the licensing of custom bonded warehouse, right? What are the if any information is required from my side, so you can also comment on the comment box, right? And thank you guys.